अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरी आवाज़ सही आ रही है। मैंने आई हैवंट बीन एबल टू रिकॉर्ड लेक्चर्स बिकॉज ऑफ माय लैपटॉप, लेकिन अब ज़रा मेरे पास फंक्शनिंग लैपटॉप आ गया है, तो होपफुली टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम मैं हर दिन एक छोटा सा 15 या 20 मिनट का लेक्चर भेज दिया करूँगी, एक्सेप्ट फॉर सैटरडेज एंड संडेज। आज शायद ये लेक्चर फ्राइडे को जाए या शायद सैटरडे को जाए, लेकिन आज के बाद से इंशाल्लाह सैटरडे और संडे को काम नहीं होगा। इसके अलावा मंडे थ्रू फ्राइडे आई ट्राई टू अपलोड स्मॉल लेक्चर्स। लेक्चर के साथ मैं एक गूगल क्विज फॉर्म भी दूंगी। सो फॉर योर अटेंडेंस आफ्टर यू आर डन व्यूइंग द लेक्चर, गो ऑन दैट फॉर्म। उसमें आपको अपना नाम लिखना होगा एंड देन आंसर ऑल द क्वेश्चन, and that will be your attendance. So the questions carry marks, लेकिन वो marks कहीं count नहीं हो रहा है। वो marks बस इसलिए हैं क्योंकि Google Form option देता है marks की, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। कभी कभार Google Forms जो है वो marks देने में mess up कर देता है, क्योंकि उसके अंदर जो आंसर मैंने फीड किए होते हैं वो उसके अलावा कुछ मार्क करने लगता है। इसलिए मैंने फीडबैक में आंसर लिख दिए हैं, यानी जब आप सब सेलेक्ट कर लेंगे, जब आप टाइप करेंगे जो आंसर्स और सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो आपको फीडबैक में नीचे वो आंसर भी लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो हो सकता है आपके आंसर बिल्कुल सही हो, फॉर एग्जाम्पल यू शुड गेट 2 out of 2, बट गूगल फॉर्म आपको 0 दे रहा है या 1 दे रहा है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। इफ जो आपने फीडबैक में आंसर लिखा है वो सही है तो योर आंसर इज करेक्ट। और वैसे भी वी आरंट कंसर्न्ड अबाउट मार्क्स, ये सिर्फ अटेंडेंस के लिए, द मार्क्स डोंट काउंट। वो क्वेश्चन करते हुए अगर कोई मुश्किल हो आपको तो जस्ट राइट इट डाउन कि ये एक सवाल है, ये मुझे नहीं आ रहा, या जो भी है, राइट इट डाउन विद यू। एंड ऑन वेंसडे इंशाल्लाह विल हैव अ लाइव क्लास। बस हफ्ते में एक ही लाइव क्लास होगी वेंसडे को फ्रॉम 8 to 8:30, and then you can ask me anything that you don't understand. तो हमने पिछली बार मॉडल वर्ड्स किया था। आपका पहली सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास है ये, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिव्यू मॉडल वर्ड्स अगेन, क्योंकि पिछली बार काफ़ी लोग नहीं आ पाए थे, पॉइंट्स वगैरह नहीं चल रहे थे। सो उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी जितनी पहली बार गई थी, बट जस्ट ऑफरिंग अ रिव्यू, दैट्स इट, दिस इज जस्ट अ रिव्यू क्लास। सो मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? So modal verbs are known as helping verbs या auxiliary verbs, and they show the modality of the main verb. वो मेन वर्ब्स को हेल्प करते हैं, उनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। मॉडल वर्ब्स के अलावा भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं कुछ, जैसे हैव और बी वगैरह, इज, हैज, वो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। तो मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स काफी सारे होते हैं, उसमें एक टाइप है वो मॉडल वर्ब्स की भी है। बेसिकली ये मेन वर्ब्स को हेल्प करते हैं, उनकी मोडालिटी शो करते हैं, यानी वो जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ बताते हैं। एंड विल सी आगे हाउ दैट वर्क्स। आपके सिलेबस में 9 मेन टाइप ऑफ मॉडल वर्ब्स हैं: कैन, कुड, shall, should, may, might, will, would, must. And these are used to show 9 main things: permission, possibility, advice, certainty, probability, willingness, request, obligation, ability. इसकी बात हमने पिछली क्लास में कर ली थी कि when we say permission तो we also mean refusal, when we say possibility तो उसकी opposite impossibility भी, when we say certainty तो उसका मतलब मॉडल वर्ब uncertainty भी दिखाता है। यानी अगर परमिशन है कि यू कैन डू दिस, तो रिफ्यूजल जो होगा यू कैन नॉट डू दिस, वो भी आएगा। तो यानी ये जो 9 है इसका उलट जो है वो भी मॉडल वर्ब दिखाएगा इफ इट्स इन द नेगेटिव फॉर्म। सो आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, सो मॉडल वर्ब्स का पहली बात जो मॉडल वर्ब्स के बारे में आप यू शुड नो इज के मॉडल वर्ब्स अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते। अगर आप इधर देखें तो ये डू जो है, डू इज नॉट अ मॉडल वर्ब, ठीक है। डू एक मेन वर्ब है, एक मेन वर्ब जैसे स्पीक, लिसन, जंप, रन, व्हाटएवर। तो डू एक मेन वर्ब है। तो अगर आप डू को देखें तो दे के साथ दे डू दिस, वी के साथ वी डू दिस, लेकिन ही के साथ ही डज,
she के साथ she does, it के साथ it does, run, speak, listen, सब जो verbs हैं हमने subject verb agreement में पढ़ा था कि जो main verbs हैं वो अपनी form change करते हैं. तो he listens to me होगा versus we listen to them, right? तो किसी में listens आएगा, किसी में listen आएगा. अगर continuous form है तो listening होगा, अगर past form है तो listened होगा. Do की अगर past form है तो they did this होगा. तो जो subject होगा उसके हिसाब से verb change होगा मेन वर्ब में. जो टेंस होगा उसके हिसाब से वर्ब चेंज होगा मेन वर्ब में. इधर आप देखें सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, वर्ब भी चेंज हो रहा है, लेकिन मॉडल वर्ब्स की सिर्फ एक फॉर्म होती है जिस फॉर्म में वो होते हैं. वो टेंस के हिसाब से भी चेंज नहीं होते और वो सब्जेक्ट के हिसाब से भी चेंज नहीं होते. कैन एक मॉडल वर्ब है. ही कैन डू दिस, शी कैन डू दिस, दे कैन, वी कैन, इट कैन. तो वी कैन्स नहीं हो गया, दे कैन्स नहीं हो गया, राइट. तो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, द मॉडल वर्ब हैज ओनली वन फॉर्म, वो अपनी फॉर्म रिटेन करता है. सो आई होप दिस इज क्लियर. Okay, so the four advice for modal verb is a modal verb is followed by a main verb in its base form or an auxiliary verb. So modal verb को अगर आप देखें, she can modal verb है and it's followed by a base a verb in its base form uh, and then बाकी sentence she can speak fluent English. So what this means is कि जैसे हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि base form is, let me just pause, I think ये hang हो गया है. Okay, it's working again. हाँ, तो base form जो है वो आपकी होती है मेन फॉर्म जिसके साथ कुछ नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पीक की बात करते हैं, आपके पास वर्ब है स्पीक, बोलना. तो स्पीक इज द बेस फॉर्म और इसकी एडिटेड फॉर्म्स होंगी स्पीक्स, स्पोक, स्पीकिंग, ठीक है, एक्सेट्रा, जो भी इसके डिफरेंट टेंसेस एक्सप्रेस करती हैं. लेकिन जो मेन फॉर्म है विदाउट एनी एडिटिंग वो है स्पीक. तो मॉडल वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब इन इट्स बेस फॉर्म. बेस फॉर्म में जो मेन वर्ब है वो आता है. सो शी कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, शी विल कुक समथिंग. सो शी विल कुक्स नहीं, शी विल कुकिंग नहीं, शी विल कुक, ठीक है. शी विल लिसन, ही विल जंप, नॉट जम्प्स, नॉट जंपिंग. सो जब भी मॉडल वर्ब के बाद बेस जब भी मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब आए तो वो हमेशा अपनी बेस फॉर्म में आता है. अगर मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब ना आए, कोई और ऑक्सिलरी वर्ब आए, जैसे कोई और ऑक्सिलरी वर्ब की एग्जांपल है हैव आए या बी आए, तो वो भी इस तरह आएगा. स्विमिंग कैन बी difficult. You can have the last biscuit. तो you see here कि ये जो form है वो have है, not has. यानी present basic form of the word, not having. be भी जो है वो it's the main form be. It's not going to be is. Swimming can is difficult नहीं होगा, swimming can being difficult नहीं होगा. तो जब auxiliary verbs have और be भी आते हैं तो वो अपनी main forms में आते हैं अगर modal verb के बाद आए. We've already talked about this last time, but for those of you who weren't there,
a small revision. Modal verb formations. Modal verbs share certain characteristics. They don't change form to match their subject. हमने ये बात कर ली, चाहे कुछ भी subject हो, cans नहीं होगा, can ही रहेगा. The modal verb stays the same for any subject. They don't change form to match their subject. They are always followed by a main verb in its base form. So I can play the piano quite well. So the base form of the verb aega, not plays, not playing, not played, but play, the most basic form. I can play the piano quite well. So it's subject plus modal verb, जिसकी एक ही form होती है, plus base form of the main word, main verb, plus the rest of the sentence. This is the structure of composing a simple sentence with a modal verb. Okay. Number 2. Modal verbs don't change tenses. Dani, they remain the same in past, present, and future mostly. So modal verbs, like we said, do not have past, present, or future tenses. So अगर आपके पास, for example, modal verb है should. Okay, it's hanging again. So let me give it time. Okay. So if it's, for example, the modal verb is should, then you won't say कि should past tense में shoulded हो जाएगा, or something like this, right? This is wrong. You can't say that it will be present continuous में shoulding. That's wrong. So should means that there is simply should. Should ही रहेगा, will ही रहेगा, can ही रहेगा. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक फ्यूचर सेंटेंस की बात कर रहे हैं, शी विल स्टार्ट द क्लास एट 8 AM टुमारो, वो कल 8 बजे क्लास शुरू करेंगी. और अगर आप एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, शी विल बी स्टार्टिंग द क्लास राइट नाउ, अभी अभी क्लास शुरू कर रही हैं. So it's the main verb that's changing. Like, look what is happening over here. It's the main verb, it's start, that becomes starting. और उससे पहले यहाँ पे present continuous में be आ गया, because remember the modal verb के बाद जो आता है वो base form में verb आता है, तो starting नहीं आ सकता. She will starting the class right now नहीं हो सकता, because this is not the base form. तो हमें auxiliary verb लगाना पड़ेगा be in its base form. So she will be starting the class right now. So this is something happening in the future, and this is something happening right now at this very minute. And to express this, इस बात को express करने के लिए कि ये कुछ future में होगा और ये कुछ अभी हो रहा होने वाला है, बिल्कुल या अभी हो रहा है, इसको express करने के लिए हमने main verb को change किया. Start जो है वो starting बन गया, लेकिन the modal verb remains the same. So I hope this is clear. Please take a good look at these two sentences. Okay. And then we talk about negatives. Modal verb को negative बनाने के लिए we just simply add not. So he should go out today. उसको आज बाहर जाना चाहिए. तो अगर हमें बनाना है कि उसको आज बाहर नहीं जाना चाहिए, तो simply modal verb के बाद हम should modal verb should के बाद हम not लगा देंगे. So negatives are made simply by adding not.
Negatives are formed by adding not between the modal verb and the main verb. So you should run a marathon, you should not run a marathon. इधर हम modal verbs और उनके negative contractions की बात कर लेते हैं. So हमें पता है कि modal verbs जो होते हैं उनकी contracted forms होते हैं negative में. So for example आपके पास modal verb है can. इसको आप नेगेटिव बनाएंगे ये हो जाएगा कैन नॉट. और अगर इसके आप कॉन्ट्रैक्शन करके लिखना चाहें, इसको छोटा करके लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कैंट. सिमिलरली कुड की नेगेटिव होगी कुड नॉट और इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा कुडंट. मस्ट और शैल जो है उसका होगा शैल नॉट एंड शैल नॉट जो होता है वो होता है शैंट. शुड नॉट होता है shouldn't. will not होता है won't. would not होता है wouldn't. may not होता है mayn't. might not होता है mightn't. must not होता है mustn't. तो इसके अंदर ये जो आपको सारा दिखाया है इसके अंदर mayn't is not used anymore. जब हमें may not कहना होता है तो हम may not ही कहते हैं. mayn't is very informal. We don't use it anymore. mightn't भी अभी भी इस्तेमाल होता है थोड़ा थोड़ा but it's almost gone out of fashion. It's almost not used anymore. हम might not पूरा ही कहते हैं. So this is it. Can का can't, could का couldn't, shall का shan't, should का shouldn't, will का won't, would का wouldn't, may not, might not का mightn't, must का negative contraction must not, mustn't. So these are things that you should know. The last thing is questions are made by moving the modal verb before the subject. So they can run very fast. इसके अंदर अगर आप देखें तो subject आ रहा है, modal verb आ रहा है, main verb आ रहा है. अगर हमने इसको question बनाना है तो हमने जो modal verb है वो हम पहले ले आए और जो subject है वो हम बाद में ले आए. And I hope everyone knows that subject in a sentence is the thing that is doing the action. तो कौन तेज भाग सकता है? They. So the action can be done by they. So they subject है. So to make questions, the subject and the modal verb switch positions. Questions are formed by swapping the subject and the modal verbs. They should visit the castle. Should they visit the castle? Question mark. Whenever you type questions, अगर आप उसमें भी Google form के answer में भी type करेंगे, so should they visit the castle के बाद space दे के question mark नहीं डालें, please. Without space question mark डाला जाता है. So this is basically it. And I hope you will do the Google form thing, and until the next class we will move forward. This was a bit of a revision for what we did in the old